हेलो गाइस। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक पूरी वीडियो सीरीज बना रहे हैं सैड एसएडी सॉफ्टवेयर एनालिसिस एंड डिज़ाइन के प्लेलिस्ट पे इस टॉपिक पे। उसी प्लेलिस्ट का आज हम तीसरा लेक्चर करने वाले हैं जिसमें हम लोग करेंगे सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल क्या है एंड उसका क्या प्रोसेस मॉडल को क्यों फॉलो किया जाता है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट एंड एक आइडियल प्रोसेस में क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होती हैं, क्या-क्या नेसेसरी चीज़ें होती हैं, वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो उससे पहले थोड़ा-सा एक रिकैप कि आज हम क्या करेंगे और हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था। जस्ट अ ग्लैम्स कि लास्ट लेक्चर में हमने किया था एसडीएलसी होता क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में जो डिफरेंट 6 फेजेस जो हमने कवर किए थे लास्ट लेक्चर में, स्टार्टिंग फ्रॉम रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉइंग एंड मेंटेनेंस। वो हमने किया था और आज हम करने वाले हैं कि लाइफ साइकिल मॉडल्स क्या होते हैं, उसके अंदर फेज गेटिंग कंसेप्ट किसको कहते हैं और हम मॉडल्स को एक्चुअली फॉलो क्यों करते हैं रेदर देन डायरेक्टली कोडिंग एड हॉक रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दीज मॉडल्स? सो लेट्स सी, मूविंग अहेड। So what is a software life cycle model? So by definition, a life cycle model is a representation of the SDLC that defines the order of the phase. There is an entry and an exit criteria for each phase and deliverable also attached to each phase. You're giving the team a shared roadmap. So basically, whenever you're working on a software system, a team is designated to that project. So वो जो टीम होती है जिसमें अलग-अलग रिसोर्सेज होते हैं, उन टीम को एक शेयर्ड रोड मैप प्रोवाइड करता है एक मॉडल। और उस मॉडल में एसडीएलसी रोड मैप फॉलो करते हुए डिफरेंट डिफरेंट फेजेस रखे जाते हैं। हर फेज में there is a entry criteria to that phase and an exit criteria to that phase, and every phase has a deliverable. So in short, if I have to break the definition into three component, one is the order of the phases. जितने भी फेज हों किसी भी एसडीएलसी प्रोसेस के अंदर, किसी भी एसडीएलसी मॉडल के अंदर, सो हर फेज एक दूसरे फेज से जुड़ा हुआ होता है, कोई भी डिस्कनेक्टेड नहीं होता। एक फेज के बाद दूसरा फेज होता है, सो दैट्स द ऑर्डर ऑफ द फेज। देन in this life cycle models, you always will find an entry and exit criteria. So entry criteria is a criteria जिसमें before entering to a phase, जब तक वो entry criteria fulfill नहीं हो जाता तब तक next उस particular phase में हम लोग enter नहीं कर सकते। Same way, जब तक exit criteria complete नहीं होता तब तक हम उस phase से निकल भी नहीं सकते। So that's the true value of exit entry criteria. Then the deliverable. So what is deliverable in the sense in a phase? Like the document and the product each phase must produce. So there is a tangible or non-tangible output that we expect from a phase. So take an example of a coding. For example, after the coding phase is over, we expect a source code, a working code model that can be given to the testing team and deployed onto the servers. So that's the deliverable of the coding phase. Now there is something that I want to clear the jargon. Like during the whole course, you will hear different names of the same thing. Like sometimes we will be using software lifecycle model. Sometime on the same context, we will be using process model or sometime SDLC model. So all these three are same. So there is no difference between all of these three. We will be using it interchangeably. So don't get confused in the series as well as the exams. नाउ द कोर क्वेश्चन ऑफ दिस होल लेक्चर कि हम लोग आखिरकार ये मॉडल यूज क्यों करते हैं और हम लोग विदाउट मॉडल अगर इस प्रोसेस से ना जाएं तो उसके क्या-क्या नतीजे होते हैं, क्या उसके नुकसान उठाने पड़ते हैं। तो अगर फर्स्ट हम उसके एडहॉक और नो मॉडल वाले सिनेरियो को समझते हैं कि अगर एडहॉक मॉडल है कि रन टाइम पे आपके पास कुछ भी एरर, कुछ भी आपके पास डेवलपमेंट के लिए वर्क आइटम आता है और आप डायरेक्टली कोडिंग के लिए चले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास कोई प्लान नहीं होता, आपके पास कोई ऑर्डर नहीं होता। सो यू कीप ऑन डूइंग द कोड एंड व्हेन द स्टेकहोल्डर्स come to know that this is the designed model, this is a designed system, and eventually sometimes contradictory views होते हैं।
from the client and the development team. So it is always recommended to follow a particular process so that all the requirements are captured upfront. Then uh, अगर आप एडहॉक मॉडल के साथ जाएं तो एक एंडलेस कोड एंड फिक्स की एक लाइफ साइकिल इन्फिनाइट लूप चलती रहती है। जैसे कि आपने कुछ कोड किया, कुछ इश्यू आया, आपने फिक्स किया, फिर उस फिक्स करने के बाद कुछ और ब्रेक हो गया, फिर आपने उसको फिक्स किया, आपने कोड किया, उसके बाद उसका कुछ फिक्स हुआ बट कुछ और ब्रेक हो गया। तो इस इन्फिनाइट लूप में जाते रहते हैं बिकॉज द रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियर, एड हॉक रिक्वायरमेंट्स keep on raising and you don't know when to stop. Afterwards, if the ad hoc thing comes in, you never will be able to calculate the efforts. अगर आपके पास प्रॉपर डिजाइन सिस्टम हो, आपके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फेज मैनर में प्रोसेस डॉक्यूमेंटेड हो, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि 20% हो गया आज, कितना परसेंट बचा है, कितने रिसोर्सेज मुझे डेडिकेट करने हैं इस पर्टिकुलर फेज को कंप्लीट करने के लिए। बट अगर आपके पास प्रोसेस ही नहीं होगा तो यू वोंट बी एबल टू मैनेज और measure the progress कि कितना परसेंट हो गया है। So you will always be in the state of 99% syndrome. So that's the case. Then you have a fall apart for big teams because let's say आपके पास बहुत बड़ी टीम हो जिसको अलाइन करना है डेली, बट अगर एडहॉक काम आएंगे तो वन डे एक डेवलपर किसी एक काम में काम कर रहा है, द सेकंड वन डजंट नोस कि दैट वर्क इज बीइंग टेकन केयर ऑफ and he starts working on the same job. So misuse of resources. And for example, there is a case, let's say miscommunication. Let's say अगर कोई task आया, A thinks that B is doing the work and then B thinks A is doing the work, but no one is actually doing the work. So that can be a problem in big teams when you don't have a proper model in place and you follow ad hoc model. And lastly, and which is obvious, that it is almost impossible to maintain because ad hoc requirements are not documented. आज ये है, कल को कुछ और आ जाएगा, आप कल वाली चीज को भूल जाओगे और फिर एक हफ्ते बाद वही चीज वापस आ जाएगी जिसको आपने कभी डॉक्यूमेंट ही नहीं किया था। तो इम्पॉसिबल टू मेंटेन। अब ये तो हमने नेगेटिव साइड्स देखे एक एड हॉक मॉडल को यूज करने के, बट लेट्स से इफ वी go to follow, let's say if someone follows a model, so what is the advantage? First of all, it's a agreed roadmap with different stakeholders, client, development team, um, or different stakeholders, as in the client's client, or the approving authority, or the designing authorities. Everyone is part of that approval process, and then everybody agrees that ये रोड मैप रहेगा, इतना दिन, इतने हफ्ते, इतने रिसोर्सेज इस टाइम लगेंगे, सो एवरीवन इज ऑन द सेम पेज। देन द डिलीवरीज आर क्लियर। लाइक आपने अगर एक महीना दिया रिक्वायरमेंट गैदरिंग को, सो यू नो दैट एक महीने में इतना रिक्वायरमेंट गैदरिंग हो जाएगा, एंड देन एवरीबडी नोज दैट ये माइलस्टोन्स इतने टाइम में हो जाएंगे, इतने मुझे रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, एंड वो जब प्रोसेस एंड होगा तो हमें इवेंचुअली ये भी पता रहेगा कि डिलिवरेबल्स कितने कंप्लीट हो चुके हैं। एंड इसका एक और फायदा ये है कि हर चीज मेजर कर सकते हैं। मिड ऑफ द प्रोसेस कुछ भी ब्रेक होता है तो वी कैन पुट प्रॉपर रिसोर्सेज ऑन टू इट सो दैट मिस कम्युनिकेशन भी ना हो, क्योंकि जब बड़ी बड़ी टीम्स में स्केल्ड टीम्स में काम करते हो, लेट्स से if you're creating a system which have lot of different components interacting with each other and a single team doesn't takes care of it, let's say it's a microservice based architecture, so where every team is assigned a microservice to take care of it. So when working in scale, you have to have a process, you have to delegate a team, you have to align measurable outputs to the process. Then lastly, if everything is documented, there is no repeatable work, no predictable unpredictability in the process. Now, the very important concept is entry and exit criteria and the gates. So gate is nothing but it's a junction between one phase to another phase, and a gate is accommodated by an entry and exit criteria. You can enter a gate only when the entry criteria is met, and you can exit a gate whenever the exit criteria are met. So for example, in this diagram, we can move on to the coding phase and there is a gate in between, and we can only enter the coding stage once the exit criteria of the design phase is completed. And we can only enter the coding phase when the entry criteria is met for the coding phase. So that's the whole gist of entry gates. Now there is an anti-pattern. Let's say you are not following a modern that we discussed earlier. Also, let's say if you go ahead with the ad hoc development, आप लोग build करोगे
and fix karoge, this loop will go on and on and on. You start with a 50 line of program and it becomes huge, humongous, impossible to scale, impossible to manage. So that's the problem with the built-in fix approach. Then there are some key pointers to remember from the exam point of view, that there are some characteristics of a good lifecycle model. One is well-defined phases. Second is clear entry and exit criteria. Third is defined delivery and milestones. Then fourth is support, control, and measurement. So for example, you have a proper progress and quality can be tracked when you have a process to it. Then there are different models which fits different project. And in going forward in the next classes, we'll go through different SDLC models. So it's not necessary कि हमेशा आपको waterfall ही follow करना पड़े. You can go with agile if the project demands, if the risk is there. So depending upon various factors, we can choose different processes or models. Then moving on, in the coming lectures, we will go through different models that are there in SDLC. So to name few, we have waterfall model, we have iterative or V model, then we have a prototyping model, then there is spiral, agile, and evolutionary model. Each one of the different life cycle model have a different way to arrange the SDLC phases. So the phase uh, that we saw in the previous lecture, the 6 phases, that not may not be necessary that these phases are in the same order. It depends upon the different models. The arrangement is different, but yeah, it is sequential. Then there are some exam traps to take care. These are the common mistakes. Let's say model and SDLC. A model arranges the SDLC phase. It isn't a different set of phases. So model and SDLC are same. Then there are some. Don't forget this keyword build and fix. It's named as bad approach. No white fails. Now these are some recaps that we covered in today's lecture. You can pause the video and see through it again. You just have to recall these things. These you can take a note of it, or rather, I will also a PDF, a note. I will also attach to the video of every video that you can save, and you can have a quick instead of writing a note, written note, you can have those PDFs for your revisions. Now a practical question before leaving out for this video. So the question is, why is the build and fix approach unsuitable for large projects? And you have to list 3 reasons and 3 traits of a good life cycle model. So you can answer it in the comment. I will pin the best one out of it. So this is it. Next video will cover the software engineering paradigm. So see you soon.